Good morning, students. So today we will do the last question of the worksheet 3.6, that is Ruhi travels 300 kilometer to her home partly by train and partly by bus. She takes 4 hours if she travels 60 kilometer by train and the remaining by bus. If she travels 100 kilometer by train and the remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and the bus separately. So in this case, we have to assume that the speed of the train and the speed of the bus. So let the speed of the train is equal to x kilometer per hour and the speed of the bus is equal to y kilometer per hour. Now the total distance is given, that the total distance is 300 kilometer and the Ruhi has to travel some distance by train and some remaining distance by bus. So first of all, if she has to travel 60 kilometer by train, so the time becomes, time is equal to distance upon speed. So time becomes 60 kilometer is the distance and time is, she has to travel by train. So the time is x, speed is x kilometer per hour. So the time becomes 60 upon x and the remaining by bus. 300 kilometer is the total distance and she is traveling 60 kilometer by train. So the remaining becomes 300 by minus 60 is equal to 240 kilometers. Now the time becomes 240 kilometers divided by the speed of the bus, that is y kilometer per hour. So if for the first case time is 60 upon x and for the second case 240 upon y. Now she has to travel, she has to cover the 300 kilometer the distance, 300 kilometer distance by train and bus, by both, and she took 4 hours. So our equation becomes 60 upon x plus 240 upon y is equal to 4. ये 60 upon x भी टाइम पीरियड था, हमने टाइम पीरियड निकाल लिया. अब उसको बस से भी ट्रेवल करना है और ट्रेन से भी ट्रेवल करना है. तो सबसे पहले ट्रेन से ट्रेवल कर रही है, फिर बाकी जो बचता है वो बस से ट्रेवल कर रही है. तो दोनों 300 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, दैट इज इन 4 आवर्स. सो आवर इक्वेशन इज 60 अपॉन एक्स प्लस 240 अपॉन वाई इज इक्वल टू 4. लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1. Now next, if she travels 100 kilometer by train, so now 100 upon x, 100 is the distance and the speed, that is speed of the train is x, so time period is 100 upon x plus the remaining by bus. Remaining becomes 300 minus 100 is 200 divided by y. She takes 10 minutes longer. 10 minutes longer means कि 4 hours तो लग ही रहे हैं और 10 मिनट्स जो है वो एक्स्ट्रा लग रहे हैं. तो 4 hours and 10 minutes एंड 4 hours और 10 minutes को भी hours में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट इनटू hours. So it becomes 10 upon 60. In 1 hour 60 minutes are there. So in 1 minute 1 upon 60 hours are there. So 4 plus 10 upon 60, 4 plus 1 upon 6 is, it becomes 25 upon 6. Let it be equation number 2. Now this is not a linear pair of equation. First of all, we have to reduce into the linear pair of equations. So 1 upon x is equal to a, 1 upon y is equal to b. First equation, this becomes 60a plus 240b is equal to 4. अब इसमें क्या करना है कि इस 4 को आपने कट करना है, तो इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करना है. तो आपने यहाँ से 4 कॉमन निकालना है. वैसे तो 60 कॉमन है ना, तो 60 अगर हम कॉमन निकालते हैं तो फिर से ये फ्रैक्शंस में आ जाएगा. तो इसमें हमने सिर्फ 4 को कॉमन निकालना है और इस 4 के साथ कट कर देना है. 4 is taking as common, तो it becomes 15a plus 60b is equal to 4. 4 के साथ 4 को कट कर दिया, it becomes 15a plus 60b is equal to 1. That is equation number, this is equation number 1. Now this is the equation number 3 and it is the equation number 4.
Now a second equation 100a plus 200b is equal to 25 upon 6. यहाँ से भी 25 को कॉमन निकाला 25 4a plus 8b is equal to 25 upon 6. 4a plus 8b is equal to 25 से 25 को कट कर दिया 1 upon 6. Let it be equation number 4. Now the two equations are there. 15a plus 60b is equal to 1. 4a plus 8b is equal to 1 upon 6. अब हमने 15 को और 4 को वेरिएबल को अगर एलिमिनेट करना है तो 15 और 4 का एलसीएम ले लिया, दैट इज इक्वल टू 60. तो 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 बनाने के लिए और 4 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 60a प्लस 240b इज इक्वल टू 4 एंड 60a प्लस 120b इज इक्वल टू 15 अपॉन 6. a वेरिएबल इज कैंसल्ड आउट and 240 minus 120 is equal to 120b is equal to 4 minus 15 upon 6. Now 15 upon 6 is in fraction, so take the LCM. 6 is the LCM. 24 minus 15 is equal to 9 upon 6. Now b is equal to now 9 upon 6 और multiply it with this 120. दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा और इसको कट करके b की वैल्यू आ जाएगी 1 upon 80. Now to calculate the variable a, substitute the value in 15a plus 60b is equal to 1. 15a plus 60b is 1 upon 80 is equal to 1. 15a plus 3 by 4 is equal to 1. 15a is equal to 1 minus 3 by 4. It becomes a is equal to 1 upon 60. Therefore last में आपने लिखना है a is equal to a variable and b variable we have calculated. Now we have to find the values of x and y. So what we have assumed here, 1 upon x is equal to a, that is 1 upon 60. X is equal to 60. 1 upon y is equal to b, that is equal to 1 upon 80. Y is equal to 80. Now the speed of the train is equal to 60 km per hour and the speed of the bus is equal to 80 km per hour. Okay, is it clear? Now the worksheets 3.7, that is the optional worksheet. First question is the ages of two friends Annie and Biju differ by 3 years. Annie's father Dharam is twice as old as Annie and Biju is twice as old as sister Kathy. The ages of Kathy and Dharam differ by 30 years. Find the ages of Annie and Biju. Now we have to assume that the ages of Annie and Biju, let it be equal to x and y years. First, in the first line it is given that the difference between their ages is equal to 3 years, that is x minus y is equal to 3, equation number 1. Now in the second line it is given that Annie's father Dharam is twice as old as Annie. So age of Annie's father is equal to twice the age of Annie. It becomes 2x years. Now it is given that the Biju is twice as old as his sister Kathy. But in this case we have assumed the age of Biju here, not the age of Kathy. So if Biju की age जो है वो Kathy की age से twice है, so it means Kathy की age Biju की age से उसका half है. अगर बीजू की एज ट्वाइस है तो कैथी की एज जो है वो बीजू की एज से हाफ हो जाएगी. तो एज ऑफ कैथी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीजू एज, तो दैट इज इक्वल टू y अपॉन 2. नाउ द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस इज इक्वल टू 30. 2x minus y upon 2 is equal to 30. Two equations are there, x minus y is equal to 3 and 2x minus y upon 2 is equal to 30. Now multiplying it with equation number 1 with the 2, we get 2x minus 2y is equal to 6. 2x minus y upon 2 is equal to 30. After solving, minus 2y plus y by 2 is equal to minus 24. Y is equal to 16. Now substituting the value, x minus y is equal to 3, x minus 16 is equal to 3, x is equal to 19. So the ages of Annie and Biju is equal to 19 and 16 years. You can check your answer also. The difference between their ages is 3 years. So 19 minus 16 is equal to 3 years.
Now the next question is, one says, second part, one says, give me 100 friend, I shall then becomes twice as rich as you. The other replies, if you give me 10, I shall be 6 times as rich as you. Tell me what is the amount of their respective capitals. अब इसमें क्या करना है कि आपने दोनों का अमाउंट, दो फ्रेंड्स हैं उनका अमाउंट जो है, जितना अमाउंट है उनके पास, वो आपने एज्यूम कर लेना है. तो लेट द अमाउंट द फर्स्ट फ्रेंड हैज, that is equal to rupees x, and the amount the other friend has, second friend या other friend has, is equal to rupees y. अब जो फर्स्ट फ्रेंड है वो क्या बोल रहा है कि ये गिव मी 100 फ्रेंड, तो वाई के पास 100 रुपीज़ हैं, तो वो उससे बोल रहा है कि मुझे 100 रुपीज़ दे दो. तो जो फर्स्ट फ्रेंड है एक्स, उसके पास 100 रुपीज़ हो जाएंगे, तो एक्स प्लस 100. लेकिन वाई अगर उसे 100 रुपीज़ दे देगा तो वाई के पास जो है वो 100 रुपीज़ कम हो जाएंगे, तो वाई माइनस 100 कर देंगे. तो जब ये इसको अमाउंट दे देगा, फर्स्ट फ्रेंड को अमाउंट दे देगा, तो हमारे पास आ गया x प्लस 100 और यहाँ पे आ गया y माइनस 100. लेकिन फर्स्ट फ्रेंड क्या बोल रहा है कि गिव मी 100 फ्रेंड, देन आई विल बी ट्वाइस एज रिच एज यू. तो x प्लस 100 इज इक्वल टू 2 टाइम्स y माइनस 100. x प्लस 100 इज इक्वल टू 2y माइनस 200. x माइनस 2y प्लस 300 इज इक्वल टू 0. Now for the second case, the second friend says that give me a 10 rupees. वो सेकंड फ्रेंड जो है वो फर्स्ट फ्रेंड को बोल रहा है कि मुझे 10 रुपीज़ दे दो. तो वो 10 रुपीज़ ले लेगा, तो इसके पास तो 10 रुपीज़ आ जाएंगे, तो y प्लस 10 करेंगे. लेकिन जो फर्स्ट फ्रेंड है उसके पास 10 रुपीज़ कम हो जाएंगे, तो वहां से x माइनस 10 कर देंगे. तब ये फ्रेंड क्या बोल रहा है कि ये तुम अगर मुझे 10 रुपीज़ देते हो तो मैं तुमसे 6 टाइम्स रिच हो जाऊंगा. तो y प्लस 10 इज इक्वल टू 6 टाइम्स x माइनस 10. अब इसको सॉल्व करना है. 6x माइनस 60 इज इक्वल टू y प्लस 10. नाउ द इक्वेशन बिकम्स 6x माइनस y माइनस 70 is equal to 0. Let it be equation number 2. Now the two equations are x minus 2y plus 300 is equal to 0. 6x minus y minus 70 is equal to 0. Now for this equation we are multiplying this second equation by 2 so that the y variable becomes same. X minus 2y plus 300 is equal to 0. 12x minus 2y minus 140 is equal to 0. We get x is equal to 40. Now substituting the value of x so that we can find the value of the other variable. X minus 2y plus 300 is equal to 0 and 2y is equal to 340 and y is equal to 170. ठीक है. अब लास्ट में लिखना है जो आपने एज्यूम कर रखा है, लेट को हटा देना है और देयरफॉर का साइन अप्लाई करना है. देयरफॉर द अमाउंट द फर्स्ट फ्रेंड हैज इज इक्वल टू rupees 40 and the amount of the second friend that the second friend has, that is equal to 170. Now the next question is, a train covered a certain distance at a uniform speed. If the train would have 10 km per hour faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time, and if it were slower by 10 km per hour, it would have taken 3 hours more than the scheduled time. Find the distance covered by the train. अब देखिए, वी आर डूइंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. नाउ इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन. अभी तक तो हम यही कर रहे थे कि लास्ट में जो भी निकालना होता था, हमें फाइंड आउट करना था, हम उसी को एज्यूम कर रहे थे. लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें डिस्टेंस फाइंड करना है और हमें वैसे क्वेश्चन जो है वो 2 वेरिएबल्स में सॉल्व करना है. तो हमें इसमें डिस्टेंस की जगह हम एज्यूम करेंगे, let the speed of the train is equal to x kilometer per hour and the time taken by a train to cover the distance is equal to y hours. Now the distance covered by the train क्या होता है? Distance is equal to speed into time. So distance is equal to speed into time. Speed को हमने assume कर लिया x and time is equal to y and distance का unit क्या है? किलोमीटर्स. नाउ
in this question it is given that if the train would have been 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, कि ट्रेन की स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर अगर फास्टर होगी, इंक्रीज कर दी जाए, तो उसको टाइम जो है वो कम लगेगा। तो ट्रेन की स्पीड हमने एज्यूम कर रखी है x, तो उसमें 10 को प्लस कर दिया तो हमें टाइम कम लगेगा, तो 2 आवर्स हमें कम लगेंगे। तो टाइम टेकन बाय अ ट्रेन वो है हमने एज्यूम कर रखा y आवर्स, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस जो है वो तो xy रहेगा। अब ट्रेन का जो डिस्टेंस था वो तो एक्स वाई है, लेकिन अगर हम ट्रेन को की स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं तो जो टाइम है वो हमें कम लगेगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, एक्स वाई माइनस 2x मल्टीप्लाई करके माइनस 2x प्लस 10y माइनस 20, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा। माइनस 2x प्लस 10y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, माइनस 2 इज टेकिंग एज कॉमन, x माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन इज दिस वन। नाउ द इफ द ट्रेन की स्पीड जो है वो स्लोअर कर दी जाए तो x माइनस 10, अगर ट्रेन की स्पीड कम होगी तो टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा, तो 3 आवर्स जो है वो ज़्यादा लग रहे हैं, तो y प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई। इसको भी सॉल्व कर लेना है, डिस्टेंस जो है वो हमेशा कैंसिल हो जाएगा। वी गेट 3x माइनस 10y माइनस 30 इज इक्वल टू 0। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशंस आ गई, x माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 10y माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब हम x वेरिएबल को सेम बना रहे हैं, तो 3x माइनस 15y प्लस 30 इज इक्वल टू 0। वी गेट y इज इक्वल टू 12 एंड x माइनस 5y प्लस 10, इसमें वैल्यू को पुट किया तो x इज इक्वल टू 50। सो x हमने एज्यूम किया था स्पीड ऑफ द ट्रेन, और टाइम टेकन हमने एज्यूम किया था y, और y आ गया आपका 12 आवर्स। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन कितना आ गया, एक्स वाई इज इक्वल टू 50 इंटू 12 इज इक्वल टू 600 किलोमीटर्स। ओके, थैंक यू।